Rachana, and very distinguished artist of this nation and international communities, and serving many fields, my sisters and brothers. Pursuit of peace and happiness. Healthy we will be. पक्की बात है. इसलिए उसके लिए जैसे our honorable Prime Minister of India has talked about stop single-use plastic. Right. We must join our hands together and stop it. Right. Number one. स्वामी जी, अभी जो आपने मोदी जी के बारे में बोला था कि मोदी जी लगे हुए हैं पूरे देश को शांति का संदेश देना चाह रहे हैं, इस पे आप क्या विचार देते हैं? मुझे लगता है कि शांति बनाए रखने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा, बहुत ज़रूरी है. और इस देश में खासकर यदि शांति लानी है तो वो मिल के काम करना होगा. छोटे छोटे चीज़ें हमको लेनी होगी जो हमारे दिलों को जोड़े. दीवारें ना खड़ी करें किसी भी तरह की. और मोदी जी का यही प्रयास है. 370 भी एक दीवार थी जो हमें एक दूसरे से अलग करे. कैटरैक्ट एक वो हटा दिया. बिल्कुल उसको हटा दिया गया. कहो भैया मिल के रहो. कश्मीर में ज़्यादा बिजनेस होगा, हॉस्पिटल खुलेंगे, स्कूल खुलेंगे, हॉस्पिटल खुलेंगे, तो वो हमारे भाई भी पढ़ेंगे लिखेंगे और हेल्दी रहेंगे और इस तरह से बिजनेस बढ़ेगा, लोग बढ़ेंगे. कश्मीर पूरे वर्ल्ड में इतना बड़ा फेमस हो जाएगा एक दिन. आप दीवारें तोड़ के तो देखिए, दरारें भर के तो देखिए, दिलों को खोल के तो देखिए. बिल्कुल सही फरमाया है. एक आज वो जो है विश्व में मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप जो सबसे पावरफुल इंसान माने जाते हैं, उनका एक इंटरेक्शन होगा कुछ घंटों बाद. उसके बारे में मुझे लगता है दिस इज ए अमेजिंग मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड व्हेन टू टॉप डेमोक्रेटिक नेशंस coming together and coming together on an equal platform. On an equal platform. Yes. उसमें वो नहीं है कि वो जो पहले भेदभाव का था कि इंडिया एक खत्म हो गई. We are not no longer a developing nation. क्यों पता है क्यों? मोदी जी ने कभी बदला नहीं लिया. हाँ जी. वीजा नहीं मिला तो नो प्रॉब्लम, आप एक 10 को लेके आओ, ये देश सबके लिए है. लेकिन उन्होंने बदला नहीं लिया, उन्होंने बदलाव की बयान लाई. बिल्कुल सही फरमाया. तो इस देश में बदला नहीं बदलाव लाना है. बदले की नीति से काम नहीं करना है, बदलाव की नीति से काम करना है. इसलिए आज अमेरिका जैसा देश, वेरी पावरफुल नेशन, ए नेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ए नेशन ऑफ एजुकेशन, ए नेशन ऑफ कम्युनिकेशन, सो मेनी थिंग्स आर देयर. उसके साथ मिलकर काम करने से मुझे लगता है दोनों मिलकर काम करेंगे. दिस पावर ऑफ टुगेदरनेस is not power coming together to destroy anybody. The power is coming together to bring the whole nations together. स्पिरिचुअल चीज आपसे जानना चाहेंगे चंद्रयान 2 के बारे में, क्योंकि आपने आज बोला है, तो चंद्रयान 2 को आप कितना सक्सेसफुल मान रहे हैं? मैं समझता हूँ, देखिए, संघर्ष करते रहना चाहिए. संघर्ष करके अमेरिका को 12 बार करना पड़ा. हाँ जी. रशिया को 9 बार करना पड़ा. चाइना को 7 बार करना पड़ा. और हम तो एक ही बार में वहां पहुंच गए. पहुंचे तो सही, हमारे साइंटिस्ट के लिए बहुत बड़ी बात है. बड़ी चीज है. इसलिए ये हमें इस संकल्प को, ये समस्या नहीं है, ये नए संकल्प की ओर लेके जा रहा है, नए समाधान की ओर लेके जा रहा है कि नहीं, हमें मिलकर काम करना है. इसलिए नासा ने कहा ये जो प्रयास है ये हमको भी दिशा दिखाएगा. हम लोग मिल के काम करेंगे, साथ साथ काम करेंगे. तो मुझे लगता है ये चंद्रयान 2 की जो बात है ये इसलिए है कि हम चांद पर तो पहुंचे, लेकिन कम से कम हमारे दिलों का जो चांद है, एक दूसरे के दिलों में जो मोहब्बत के चांद है, वो भी उगते रहे. ये भी हमें ध्यान देना है. स्वामी जी, एक सवाल छोटा सा है कि जैसे 370 पे हमारी गवर्नमेंट ने काम किया है, जो हटा दी गई है जी. तो कश्मीर से जो 370 हटाई गई है उसमें शांति ज़्यादा आई है या हैप्पीनेस ज़्यादा आया है? मुझे लगता है दोनों आएंगे. थोड़ी देर के लिए चीज़ें जब लोग समझते नहीं हैं, देयर इज ए फियर ऑफ अननोन, पता नहीं क्या होने वाला है. लेकिन मैं बता रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है जिससे लोगों को एंड ऑफ द टनल लाइट इज देयर एंड लाइट हैज स्टार्टेड. बिल्कुल. बस इनको स्विच ऑन करने होंगे अपने अपने दिलों के. जैसे दिलों के स्विच ऑन होंगे, लाइट दिखने लगेगी और काम बन जाएगा. इसलिए 370
ये इस देश का समाधान है संगम बनाए रखने के लिए। साहब आशीर्वाद के 2 शब्द बोल दें। मैं तो समझता हूँ बात पीस की आती है तो मस्ती की आती है, तो मैं तो हमेशा कहता हूँ जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, बाकी तो सब जबरदस्ती जिंदा है। इसलिए अपने दिल की मस्ती बना के रखो, जब भी मिलो जिससे मिलो दिल खोल के मिलो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो। आप एक कॉमन चीजें हैं, अगर किसी का चेन कहीं पर कुछ चोरी हो गया, पता होता है पुलिस को, पता होता है किसने चोरा है, सब कुछ पुलिस का कुछ पता होता है। तो हमें वहां पर कॉम्पिटेंट पुलिस ऑफिसर चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है सीबीआई। कल के दिन उन लोगों को ये खौफ रहेगा कि हमने कोई गलती करी, कुछ करप्शन किया, तो सीबीआई वहां रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी नई प्रॉब्लम है। बद्रीनाथ में भी बाढ़ आई थी तो नए में कुछ लोग नहीं गए, लेकिन आज सब बद्रीनाथ जाते हैं, आज केदारनाथ जाते हैं। ये नए मुझे लगता है 4-5 साल बाद हम इंडियन लोगों को ऐसा लगेगा जैसे हम दिल्ली जा रहे हैं, जैसे बॉम्बे जा रहे हैं, वैसे हम जो है श्रीनगर जाएंगे, घूम के आ जाएंगे, हमारे बच्चे चले जाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज थी, आपने अगर बिल देखा होगा, उसमें 2 सीटें वुमेन्स के लिए रिजर्व रखी थी, जो वहां की जो यूनियन टेरिटरी है। और 21 सीट्स जो आने वाले भविष्य में जो हमारा जो पीओ के जो कश्मीर, जो हमारा इंडिया का पोर्शन है, उसके लिए 21 सीट रिजर्व रहेंगी हमेशा। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो करेंगे, जो इस जो है नए एक्ट में किया। और एक सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ रचना, इस देश में मैंने कई प्रोग्राम देखे, अनुप्रिया मैम, लोग धारा बोलते हैं। न्यूज में अभी डिबेट चल रहा था कई सारे न्यूज चैनल में, धारा ये नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनुच्छेद होता है, धारा नहीं होता है। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा। जितने भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इवन ये प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम हुआ है, ऐसे हजारों प्रोग्राम होते हैं, वो कहते हैं धारा ये है, धारा वो। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले है, उसके बाद एक्ट बनेगा, उसके बाद एक्ट के बाद रूल होते हैं, फिर रेगुलेशन होते हैं, फिर ऑर्डर्स होते हैं। पहले हमें समझना पड़ेगा ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक अनुच्छेद है, आर्टिकल है। आर्टिकल 370 रिमूव हुआ है या मूव हुआ वहां से, हटा हुआ वहां से। तो ये धारा नहीं है। धारा तो आईपीसी सीआरपीसी में होती है, कॉन्स्टिट्यूशन में धारा थोड़ी होती है। Yeah, no, I think the topic of pursuit and happiness in J&K sort of go hand in glove with each other. As I said, pursuit of happiness is all about integrating and meeting with people and expansion. And that's why I think this whole opening up of J&K is actually a true pursuit of expansion, of prosperity, and certainly will bring happiness and peace to the entire region. That's my hope. Yes. I hope that for once for all we can settle the issues of conflicts that have been there. Certainly there will be a little bit of ups and downs, but I'm sure it'll smooth Now, out. President Trump today and our Prime Minister Narendra Modi ji, they're going to have some talks. Howdy Modi. Yes. And then even the UN General Assembly. So even the Pakistani side is there. So how do you view this? Global. Is it the cooling? Is it the cooling? Well, I think it's too recent for India has always taken a position of non-interference, and particularly this matter, as India has always said, is a matter of internal issues. And I am going to guess here is that my sense is that Prime Minister Modi is likely not to have a discussion on this issue, as that's quite settled in his mind and through the parliament. Since it's a democracy, it's a parliament action, so there's not much to discuss from that perspective. Fine. But my sense is that maybe there will be more talks about how to open up and expand the economy through investments and how foreign investment can be invited to the region. Excellent. So you're happy with the corporate restructuring? The Finance Minister Nirmala ji. Of course, that's a you brilliant. could share some views on that. Yeah, that's a. I think that is a excellent reaction. What I'm very happy about is the fact that the action has come in a timely manner. It's good to note that the government is keenly interested in reacting much quicker, much sooner, understanding that any action they might take will take a few years. It's a gestation period. So I think it's been welcomed by the world. We welcome it too. I think it's much needed, as it will bring India on the global map, particularly with respect to investment and trade. All right. So I don't know the politics part of it, but all I know is that the people of Jammu and Kashmir will be brought onto the mainstream thinking and lives of rest of the 130 crore Indians.
So the hearts have to beat, the minds have to meet. I've already said on the stage that you cannot, coerce people into, you can't demand their respect, you've got to command their respect, as they say. Right. So I wish them all the best. I have already narrated, that we in Dr. Lal Path Labs, we entered Jammu and Kashmir in the year 2001, and we see approximately 1,000 patients a day, every day, since the last 15, 20 years now. And on our own, we will keep on uplifting the medical services which are available in Jammu and Kashmir. As you know, that India is now, reeling under the onslaught of non-communicable diseases, or NCDs, and the Kashmiris are no different, from the rest of India. So we hope that we can play a good role in bringing down, diseases and deaths, from diabetes, from high blood pressure, from cancer, from cardiac ailments, from liver and kidney, lung diseases, and many more. And it is also no secret now that if we do not control these NCDs in the next, say, 10 or 15 years, the GDP of India will come down by 2%. Right, sir. So, last thing I want to ask you about the skilling development, Dr. Lal Path Labs has got a big workforce. So how do you think that the problem of jobs, unemployment, which the Prime Minister is aiming, and to make it a $5 trillion economy? Yeah. So the Prime Minister is on the right path. At least he is dreaming big, because if you dream small, you remain small. So to reach a $5 trillion economy, we all have to do our bit. And for the first thing, that the government has to ensure that the education system in India is, pulled up. Our quality of, say, 12th class pass and graduates, etc., should be much better. Right. And along with that, we have got to start the skilling set. In other developed countries, the skilling is going on as soon as the child is reaching 8th or 9th, grade, etc., etc. So with a very healthy combination, also the government must spend little more on education and health. On education, the government spends only 2.5%. On health, the government spending is about 1.4%. Right. So once these two things, have happened, I think India can look forward to a brighter future. And so how bullish are you on the latest cut by the Finance Minister, Nirmala Ji, on the corporate tax structure restructuring, So I think she's done a marvelous thing, and India Incorporated can look forward to a much better, a healthy financial environment in India now. Right. My venture is the original story of India, which is known as the land of spices. From millennia ago, it's not recent. And our spices, India's richness in spices, through millennia has been known to be a healing agent, natural healing products from the ground. We're lucky that in the region of South India, which is specifically the Malabar region, there is a soil rich that is unlike any other soil in the world, and its climatic conditions around the year allow for us to be able to grow the most extraordinary spices. And 1,000 years ago, the sages that lived down there and understood spices lived almost 1,000 years of age. Yes. It is known, and they depended on spices. Yes. I'd like to say, जैसे बचपन में हिंदुस्तान में बोलते हैं दादी माँ के नुस्खे, तो आप लोग के ये जो spices हैं, they'll be like इलायची होगी, there'll be धनिया, जीरा, जो भी काली मिर्च में जो खूबियाँ हैं, बहुत कम चीज़ों में है. सिंपल सा काली मिर्च जो होती है, बड़ी है, उनको king, it is the king of spices. So, are these detoxifying the human body today? They detox the body and also बीमारियां दूर करते हैं. हर किस्म की skin care for hair, for हर किस्म की. So Bam has become an entrepreneur. So we say Bina Romani, the entrepreneur, the women entrepreneur. Or शायद आप you'll inspire a lot of women in India. I hope so. I want to inspire every Indian because yes. And sadly today this is India's spice heritage, but it is becoming popular now from the rest of the world. Right. People abroad are using these spice extracts in their drinks, in their cocktails, and they are selling more cocktails. They are selling more. The liquor companies of the world, इतनी उनकी सेल्स बढ़ गई है क्योंकि अपने लिकर में वो अभी स्पाइसेस डालना शुरू कर रहे हैं. और यहाँ इंडिया में
किसी को भी समझ ही नहीं आई इस बात Do you want to say anything for today's event? Pursuit of peace and happiness. That is wonderful. I mean, so we need that so perhaps desperately. would like to share something. Pursuit of peace and happiness is what we all dream of. And we've got a great gathering here. Yes. And the subject of bringing peace and happiness to Kashmir and India as a whole with Kashmir is has been everybody's dream, and this is great footsteps going into that direction. And we're all here to support it. And we look forward to the day that we will all be living as one. One question, last question. I'm being called on stage. I'm so sorry. Just come back. ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को दबाइए और भी सारा टाइम की सारी नोटिफिकेशन पाइए।